हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑफ रिजल्ट सीरीज। अभी बात करेंगे टाटा कैम की। टाटा कैम के रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत ही फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाया है इसने। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे पुराने प्राइस एक्शन के रिजल्ट सीरीज के वीडियोस देखे होंगे, वहां पे आपको पता होगा कि हम कैसे प्राइस एक्शन के बेस पे रिजल्ट्स के आने के पहले या इवन बाद दोनों वक्त ही हम लेवल निकाल सकते हैं, एंट्री एग्जिट अच्छे से ले सकते हैं और ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियोस में पहले देखा होगा, चाहे वो डीएलएफ राइस हो, ऐसा ट्रांसपोर्ट का फॉल हो, नजारा टेक का फॉल हो रिसेंटली, उसके बाद एक्साइड इंडस्ट्री, एनटीपीसीज, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हमने आए बुल, ये सब कितने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो फ्रेंड्स चैनल पे जाइए और वीडियो को देखिए, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा और अच्छी प्राइस सेक्शन की लर्निंग है आपके लिए। प्लीज गो एंड वॉच दोज ओल्ड वीडियोस ऑफ रिजल्ट सीरीज। दे आर गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ प्राइस सेक्शन कैन हेल्प अस मेक लेवल्स। Right now we will talk about Tata Chem. Friends, this is not a one triple top, double top, it's a five-time top. This is a five-time top. I will say do not enter. Do not enter in Tata Cam at any cost. At current levels. At current levels. Friends, forgive me for the drawing. Drawing is really bad. It's a Zerodha platform. I will try to use some other platforms later on, probably from the next video sessions. So anyway, so this is first time, second time, third time, fourth time, fifth time, sixth time. It keeps coming, keeps coming, keeps coming and rejecting. So this is a big supply zone, friends. This is called a supply zone. After this fall, it actually made a slow recovery but steady recovery. Now it has come to this level again. So this zone is approximately, this resistance zone is approximately 7 770 to 770 to 790. It's a big zone actually. So this zone is actually very big supply zone in Tata Chem. Until unless it crosses on a weekly basis, a big candle closes above it, you do not buy, do not enter in Tata Chem till then. Now what is going to happen in Tata Chem next? First let us see this. So this actually touched the level, that resistance level. Now what it is doing, it is trying to create a price arching, which in general language we call it rounding up, cup like structure, right friends? पर हुआ क्या यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आया, इस कैंडल का वॉल्यूम और शेप देखिए, इट्स अ प्योर रिजेक्शन कैंडल, इट्स अ रिजेक्शन कैंडल. So this rejection is actually very dominant rejection. It will not let this stock now go easy. So this is become a range candle now. 793 is top and 670 is a bottom. So this zone is now will act as a range candle concept. Those who do not know, so any candle which is above, let's say 2% of the price of that particular time frame, is called a range candle, and top and bottom of that candle, they act as a support and resistance. So now this 670 and 790 is a range of Tata Chem. It has to break it either side to get a further move. Otherwise, it will keep on wasting time and it will be in the sideways zone. So friends, this is a weekly chart. Now let us see what happened for the last 3-4 weeks. So you see this, it last 2 weeks it tries to touch, it tried to touch twice, it tried to touch twice, but rejected. Every time it got rejected. Now what happened actually, it had created a base here, this base. This is an interim base, the interim base, the top of which is around 730. तो एक 730 का एक इसने इमीडिएट, ये तो नीचे का जो सपोर्ट है ही है, बट इससे पहले इट हैज मेड वन मोर सपोर्ट हियर. सो ट्राइंग टू बी इन दिस पर्टिकुलर नैरोअर रेंज टू हैव एनी ब्रेकआउट, एनी फर्दर ब्रेकआउट इन द कमिंग डेज. अब यहाँ पे जब दो बार इसने टच करके रिजेक्शन बनाया, तो इसने, ये देखिए, ये इसने लोअर हाई बनाया और लोअर लो बनाया. बट ये वीक की कैंडल देखिए आप, दिस कैंडल इज इनडिसीजन कैंडल. This is an indecision candle. It is yet to form completely because we have one more session tomorrow. If this candle remains indecision candle, if this candle remains indecision candle, expect the price to come down and touch this level. This level is 720 approximately. But if this candle actually, if tomorrow we see some action because of results, because the performance is flat, it is not much increase or decrease in performance, quarterly performance. But if we see some increase in the price because of flat performance tomorrow,
And if this candle actually closes above the high whatever it has made so far, which is 780, so if you see a weekly closing above 780 or 790, you can expect this level piercing one more time here. So this level is actually 795. So if tomorrow it shows some action above 780, it can go up to 795, from 780 to 795 for the tomorrow session. And if this candle actually remains a doji after up and down, tomorrow it closes in this shape only, price will likely to come down here and touch this 716 zone. 716 zone. So now let us go to the daily chart and see what is happening here. The daily chart, actually daily chart is pretty much more or less similar. There are a lot of rejections here, this level, and you see that after rejections it tried to actually have some sort of recovery because of buyers on a daily chart. So daily chart, if you see, the support is actually, this zone is not acting as a support because it is a lot rejection candle. These are rejection candle and you have a follow through, no doubt, but this follow through is not telling anything. This follow through is not telling anything because the price is actually having immediate resistance on top of it. So friends, right now this is a V-shaped recovery, and this zone is crucial. Now it will either decide fall or rise. Whatever is evident from this price so far is that it might, because of result, it might go to 780-90 levels tomorrow if it opens gap up, little bit gap up, and then from there, and if it opens gap up below this today's closing, then the chances are it will come down and it will take a base here, which is like 740 level. So this is daily chart friends. On daily chart और मंथली चार्ट और वीकली चार्ट पे जो सपोर्ट रेसिस्टेंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। तो एवरी टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्राइस बिहेव करेगा और कैसे आएगा, तो क्या करना है। तो अगर कल ये ऊपर खुलता है, कल के आज के क्लोजिंग के ऊपर 770-80 के ऊपर खुलता है, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए एक बार कि ये 90 की ओर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर एक 10 मिनट का कैंडल या 15 मिनट का एक अच्छा ग्रीन कैंडल बन गया तो ये 10-15 पॉइंट ऊपर की ओर दे सकता है। लेकिन अगर ये नीचे खुल गया क्लोजिंग के यहाँ कहीं खुल गया है, तो चांसेस ये हैं कि ये नीचे की ओर आएगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा इस जोन में, कहीं पे 740 वाले जोन में नीचे की ओर आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, बिकॉज इसने 2 बार रिजेक्शन दिखा दिया ऊपर। तो अभी कल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी ओवरऑल इफ आई सी फ्रॉम द मंथली, sorry, I will delete this. If friends, if I overall see from the monthly and daily and weekly chart, I'm I'm suspecting a little bit of bearishness in Tata Chem, because there are multiple top formation plus the price is rejecting, and so as of now there is no recommendation of buying, even if you are holding, or to average if you are holding and you want to average. And if you are not holding, do not buy, let it come to the lower levels and then buy. If you are buying for a positional point of view, it might go and test this trend line, friend. It can, as I told you, 740 level on a daily chart, it will come and test, and then we will see what to do. So friends, this is it in the Tata Cam, and I hope you enjoyed the price action video. And if you, any of your friends and family members are using having this stock, please share this video with them so that they get benefited. And also go to the channel and see the result series. There are a lot of action and price action learnings available in them. फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूंगा कुछ नए स्टॉक्स, नए इंटरेस्टिंग लेवल्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।